हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरबी ग्राफिक। तो आज की वीडियो में आपके लिए एक और अच्छी चीज ग्राफिक डिजाइनिंग, और अभी हमारी कोडिंग की वीडियो चलती रहेंगी और ग्राफिक डिजाइनिंग की भी। तो आज की वीडियो हमारी फिग्मा पे, आफ्टर इफेक्ट पे नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे बहुत अच्छी सी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं यूजिंग फिग्मा में। आप कैसे बना सकते हैं अच्छी अच्छी सी वेबसाइट। और अगर आपको मेरी कोडिंग की वीडियो देखनी है, अगर किसी को कोडिंग के लिए चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। अभी 2 वीडियो चाहिए और इंशाल्लाह और भी आती रहेंगी कोडिंग वीडियो। तो आपका ज़्यादा टाइम खींचते नहीं है, तो चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So I will go to the Google, and I will be in building food website in Figma. So I will go to the Figma, and first of all I will go to the new design. I will here we can like that, okay. And first of all I will build the navbar of up, okay. And first of all here we can go here, and there we can pick text tool. Here you can see it. Here I will write about home about services, contact us. And now here we can go here 48, and not 48, it is a bigger. Here we can pick 20, okay. 20 is like good, okay. And here first of all I will give it font Monserrat. I will go here, so I will lock the caps lock, and 24, 40 is good. And here I will give him 50. No, 50. 50 is not good. 30 and 48. And now here we can, and here we can building, and here we can, and here I will go. Here is yellow color and here is black, okay. Now here 40, okay. Because neighbor is not a bigger. 20 is a better, okay. And here till I'm already done. And here I will write food logo, and many much more food logo, sorry. So now I will not pick. Here we can write food, and here we can rewrite. And now his font should be, I give his font some stylish font, and no, his font is done. Okay, his font is good, all rest. And now, until I'm already done, so I will go here. Then I will go to the ellipse, and here I will draw one bigger ellipse, and bigger, and here I will front him, and here we can go back. Sorry, first of all erase him, and here I will go here and curve him. First of all I will go to the here. सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा और इसे भी थोड़ा कर देता हूँ। अब डन को दबाता हूँ, और डन को दबाने के बाद इसे इस तरफ लेके जाके थोड़ा इधर की तरफ ले गया। फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद इसका कलर हम ले लेते हैं, और कलर हमें देना है फिल हमें करना है येलो,
इसका स्ट्रोक कैसे करते हैं, हम दे देते हैं 100, 800. Okay, 800 is good. Then here I will front him, front, and till I'm okay done, so I will paste him here. Then I will go here, and here I will go to the I will download the one picture, and but its background I will remove his background. I will go remove.bg, sorry, all, then remove.bg background. Go here, go here, download, and now I will go here, and here I will paste him, then here smalling, then paste him here. So I will align him, so I will first of all up and go down and go up and go here and go. So here his will be down and go here, and here is also that. And now अब यहाँ पे आपको इसे थोड़ा इधर कर लेना है. अब मुझे बस चेक करनी है सही है. ओके, फिर यहाँ पे आपको लिख देना है अच्छा सा, सॉरी हमारा वही चला गया. हम लोग यहाँ पे से करते हैं बैक पे, बैक पे, बैक पे, बैक, ये बैक पे जाएगा. चले, अब सही है हमारा. अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा कर, यहाँ पे हम लिख देंगे फूड वेबसाइट डिजाइन, वर्ल्ड बेस्ट फूड in this restaurant. And now I will go here, and I will go here we can write, go down, go down, go down. So मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई अच्छा सा फॉन्ट दे देता हूँ. अगर कोई मिल गया, मॉन्सीरत, सॉरी है मेरे मॉन्सीरत नहीं है, यहाँ पे हम दे देना पॉपेंट सही है. चलें, इटैलिक दे देते हैं हम इसे, 64 दे देते हैं थोड़ा. एंड यहाँ पे फूड वेबसाइट वर्ल्ड बेस्ट फूड ऐसा कर लेते हैं, और फिर ऐसे करते हैं फूड वेबसाइट डिजाइन. ओके, डिजाइन and enter, and now here I will go and blackish, and I will go up, and here we can write. I will go to the Wikipedia, sorry, here I will go, and here I will write Lauren. So I will go here, so I will pick Wikipedia. यहाँ पे मैंने विकिपीडिया को डाल दिया, यहाँ पे फूड, यहाँ से मैं इतनी बायोग्राफी उठा के यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ. और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, एंटर, और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. छोटा किया यहाँ पे, 16 पे कर दिया, 16 ज्यादा ही छोटा हो गया, 32 पे कर देते हैं.
जूम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे 32 है तो हम लोग 24 पे कर देते हैं। 24 है, इसको हम 16 पे कर देते हैं। और फिर यहाँ पे आगे आके बायोग्राफी पेस्ट कर दी। और फिर यहाँ पे आप जाएंगे इस वाले पे, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एक्स्ट्रा बोल देता है लिख। और फिर यहाँ पे हम लोग इसे 20%, 10%, और ये जो ये सब है इतना हमें मिटा देना है। सॉरी, यहाँ से इरेज किया। यहाँ पे जाना है और फिर यहाँ पे जाने के बाद एंटर 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 एंटर, ऐसे आपको एंटर दबा देना है। 16 पे कर देना है और फिर बस। अब फिर यहाँ पे आपको इरेज कर देना है इसे। और फिर यहाँ पे इरेज करने के बाद थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा ऊपर, बस। और जब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे वर्ल्ड बेस्ट फूड एंड हेयर इज दैट, और यहाँ पे आप जब आपने इतना हो गया देख सकते हैं आप हमारा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं रेक्टेंगल नहीं, अब सही है हमारा इतना। ऊपर सेलेक्ट, ऊपर 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 कर दिया, साइड पे लिया थोड़ा थोड़ा सा इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं हमने वेबसाइट बना ली है अपनी। ये हमने वेबसाइट बनाई है एक फूड की फिग्मा में। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।